Gospel according to Matthew chapter 25, verses beginning from 31 and 33. When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit on his throne in heavenly glory. All the nations will be gathered before him, and he will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on his right and the goat on his left. ঈশ্বৰৰ বাক্য পঢ়োতা শুনোতাৰ ওপৰত আশীৰ্বাদ থাকক। আমেন। প্ৰথমতে ইয়াতে আমাক কৈছে যে তেওঁ নিজৰ সিংহাসনত বহিব আৰু এঞ্জেলসকল তেওঁৰ মহিমাৰে তেওঁ নিজৰ সিংহাসনত হেভেনলি গ্লোৰিজ স্বৰ্গত থকা সিংহাসনত বহিব আৰু তেতিয়া অল দ্য নেশ্যনছ উইল বি গেডাৰ্ড বিফৰ হিম, তাতে সব জাতি তেওঁৰ আগত গোট খোৱা হ'ব। অৰ্থাৎ আমি এইটো বিশ্বাস কৰোঁ যে এদিন এই পৃথিৱী যেতিয়া সকলো ফালে ঈশ্বৰৰ বাক্য শুভবাৰ্তাটো প্ৰচাৰ কৰা হৈ যাব, সকলো মানুহে ঈশ্বৰৰ বাক্যটো শুনিব, তেতিয়া আমাৰ এই পৃথিৱীৰ সকলো মানুহক ঈশ্বৰৰ যিটো জাজমেণ্টৰ আগত থিয় কৰা হ'ব। लास्ट समय में एंड टाइम में हम सभी को सिर्फ क्रिश्चियन नहीं, कोई बिलीवर्स नहीं, हर एक दुनिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर का आगे जाके खड़ा होना पड़ेगा। ये बाइबल हमें सिखाती है। द नेशंस विल बी गेदर्ड बिफोर हिम, जातियों को उनका साथ क्या किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा। ये एंड टाइम का जो अंतिम समय का ये परमेश्वर ने हमें इसको एक हिंट दिया है कि ऐसा होगा। तो आज हम लोग ये अटकलें लगाते हैं, ये हम लोग सोचते हैं या हम लोग अपना विचारधारा रखते हैं कि प्रभु आने का समय बहुत करीब है। हाँ, जो अभी स्थिति चल रहा है, जो अभी हम लोग देख रहे हैं, बीमार, समस्या और आदमी लोग का बीच में जो आज प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, दुख, आदमी लोग हमेशा गरीबी और बहुत तकलीफ में जी रहा है, जो दुनिया का हलचल हो रहा है, इसको देखते हुए प्रभु आने का समय निकट है, ये हम लोग जानते हैं या समझ रहे हैं। लेकिन ये हम लोग नहीं कह सकता है कि प्रभु काल ही आएंगे हमें ले जाने के लिए, हम लोग को प्रभु 1 साल का बाद आएंगे, ये हम कभी इसको नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये समय प्रभु खुद को उसको ही पता नहीं है, सिर्फ परमेश्वर पिता को एक समय पता है। और एकदम सही समय में प्रभु यीशु मसीह को इसका बारे में बताया जाएगा और प्रभु यीशु मसीह अपना विश्वासी को ले जाएंगे। ये हमें इसके लिए, इस सही समय के लिए हमें तैयार बैठना है। और ये नहीं है कि हम कल हमको जाना है तो आज हम लोग प्रिपेयर होंगे, ऐसे बात नहीं है। हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहना है, तैयार रहना है। तो इसीलिए इस वचन में हमें कहा है परमेश्वर ने, या বাক্যটোত আমাক যে ঈশ্বৰৰ প্ৰভু যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যবিলাকক কৈ আছে, আমাক কৈ আছে যে সেই সময়ত এইদৰে হ'ব বা এনেকুৱা সময়ত এনেকুৱা দিন আহিব যে যীশু খ্ৰীষ্টই নিজৰ প্ৰতাপ মহিমাৰে স্বৰ্গদূতৰ সৈতে তেওঁ সিংহাসনত বহিব আৰু সকলো জাতিবিলাকক তেওঁৰ আগত থিয় কৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে লিখা আছে, যিদৰে ৰখীয়াই নিজৰ জাকৰ পৰা ছাগলী আৰু ভেড়াবিলাকক ছেপাৰেট কৰে, তেনে মানুহৰ মাজৰ পৰাও কিছুমান ছাগলী আৰু কিছুমান ভেড়া আছে, তেওঁলোকক ছেপাৰেট কৰা হ'ব। আৰু তাৰ পিছত লিখা আছে, তেওঁ নিজৰ সোঁ হাতে ভেড়াবিলাকক ৰাখিব আৰু বাওঁ হাতে ছাগলীবিলাকক ৰাখিব। তো বহুত ডাঙৰ এটা ইয়াতে কথা বাইবেলত আমাক জনালে, আৰু সেই কথাটোৰ ওপৰতে আজি কিছু আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিছোঁ। ইয়াতে আমাক এই বাক্যই শিকাইছে, अपनी भेड़ा ছাগলী হয় ने अपनी ছাগলী হয়? क्या आप एक भेड़ हो या आप एक बकरी या बकरा हो? आज जो प्रीचिंग मैंने आपका आगे लेके आया हूं, इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप एक भेड़ा हो या आप एक बकरी हो। आर यू ए शिप और ए गोट? You have to decide yourself, because this is the right time. If we are deciding, we are representing as a sheep, then God will keep us in his right side. And if we become a goat, then he will keep us on the left side.
তো সোঁহাতে আৰু বাওঁহাতে ভাগ কৰি আমাক ৰাখিব। যদি আমি ভেড়া ছাগলী হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাক সোঁহাতে ৰাখিব, যদি আমি ছাগলী হওঁ আমাক বাওঁহাতে ৰাখিব। বাওঁহাতে আৰু সোঁহাতে ৰখাৰ ডিফাৰেঞ্চ, তাৰ মিনিংটো আৰু তাৰ কি হ'ব, আমি যদি তাৰ পিছৰ ভাৰ্চবিলাক পঢ়োঁ তাক আমি দেখিম। ইফ ইউ ৰিড গো থ্ৰু verse 34 onwards, then you will able to understand the benefits of standing on the right hand side of God or standing on the left side of God. ঈশ্বৰৰ সোঁফালে থিয় হোৱা আৰু বাওঁফালে থিয় হোৱা এই দুটাৰ যিটো মিনিং, এই দুটাৰ যিটো তাৰ বেনিফিট আমি যদি ইয়াৰ পিছৰ ফালে অধ্যয়ন কৰোঁ তাক দেখিম। কিন্তু সেইটো আমি পিছলৈ যাম। প্ৰথমতে আমি চাম ছাগলী আৰু ভেড়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো। ছাগলী আৰু ভেড়াৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ। পৃথিৱীৰ ফালৰ পৰা ছাগলী আৰু ভেড়াৰ মাজত কি ডিফাৰেঞ্চ আছে আমি তাক নজনালৈকে আমি এই বাক্যটো বুজিবৰ কাৰণে নোৱাৰিম। কেইটামান আমি যাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক আমি যেতিয়া চাইছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ ছাগলী আৰু ভেড়াৰ মাজত বহুত কথাটো নিমিলে। যদিও ঘাঁহ খায়, দুইটা জন্তুৱে ঘাঁহ খায়, যদিও দুইটা জন্তু একেই দেখিবৰ কাৰণে, যদিও দুইটা কি কয় এইটো একেলগে থাকে, কিন্তু তাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু সেই ডিফাৰেঞ্চকেইটা আমি আলোচনা কৰিলে আমাৰ মাজত ভেড়া আৰু ছাগলী যিটো আছে এই দুটাৰ আচল মিনিংটো আমি গম পাম। তো প্ৰথম কথাটো আমি আজি চাবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ যে ছাগলীবিলাকে সকলো বস্তু খায়। জাবৰ জোঁথৰ যিমান লেতেৰা পেতেৰা যি আছে চব ছাগলীয়ে খায়। গড ইটছ দ্য ট্ৰাছ বা জাবৰ বীজবিলাক, যিবিলাক আমি পেলনীয়া বস্তুবিলাকো বা লেতেৰা যিবিলাক খাব নলগীয়াবিলাকো ছাগলীবিলাকে খায়। কিন্তু ভেড়া ছাগলীয়ে হ'লে বহুত তাৰ বস্তুবিলাক বাছি যিটো ভাল উত্তম খাবলগীয়া সেই বস্তুবিলাক খায়। ভেড়া ছাগলীৰ যদি লেতেৰা বস্তু তাৰ আগত থাকে সেই ভেড়া ছাগলীয়ে লেতেৰা বস্তুবিলাক নাখায়। কিন্তু যিটো আমাৰ ছাগলীবিলাকে, সাধাৰণ ছাগলীবিলাকে সিহঁতি সকলো লেতেৰা বস্তুবিলাক খাই দিয়ে আৰু ভাবে এইটোৱে উত্তম। তো আজি আমাৰ इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें यह कहना चाहते हैं कि तुम्हारे बीच में भी ऐसे लोग हैं जो भेड़ा है या कुछ इसमें ऐसे लोग भी हैं जो बकरा या बकरी है, ऐसे लोग भी तुम्हारा बीच में है। तो आज हमको देखना है कि जो बकरी लोग है वो क्या करता है, वो हमेशा जो भी है वो गंदा चीज को खा लेते हैं। तो गंदा चीज का खाने का मतलब है वो लोग स्पिरिचुअल फूड, आत्मिक आहार को वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग नहीं लेते हैं। वो लोग जो भी मिलते हैं उसको ले लेते हैं और वही सही है बोल के सोचते हैं। जो गोट्स लोग हैं, जो लोग जिसको बकरा या बकरी का साथ तुलना किया गया है, हम लोग का बीच में रहने वाला विश्वासी है, यीशु मसीह का जो विश्वासी है, यीशु मसीह का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में जाते हैं, फिर भी वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग जितना भी जो कुछ भी मिलते हैं, जो कुछ उसके आगे रख देते हैं, जो भी परमेश्वर जो वचन लाते हैं सब कुछ वो लोग ले लेते हैं। लेकिन बाइबल हमें ऐसा नहीं कहता है। बाइबल में 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 2 अगर आप लोग पढ़ेंगे उसमें हमें आत्मिक दूध को पीने के लिए बाइबल हमें कहती है, स्पिरिचुअल जो मिल्क आत्मिक दूध को पीने के लिए बाइबल हमें कहती है। 1 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 2, like newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. नया जन्म होने वाला बेबी का जैसा तुम आत्मिक दूध, आत्मिक मिल्क, स्पिरिचुअल मिल्क को पीने के लिए कोशिश करो ताकि तुम अपना परित्राण में बढ़ सके। We have to drink the spiritual milk so that we can grow in our salvation. आपको आत्मा में बढ़ने के लिए, आप परित्राण में आगे बढ़ने के लिए, आप प्रभु का पास आते जाने के लिए, प्रभु का नजदीक आप दिन पहुंचने के लिए आपको आत्मिक जो आहार को खाना है। आपको हर कोई चीज आपके लिए, आपका सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन बकरी लोग क्या करते हैं, बकरी जो है वो हमेशा सब कुछ खा लेते हैं। वो लोग सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा है,
ये नबी जो है आज नया नबी निकाल गया है, नया प्रोफेट निकाल गया है, इसका बात सुनो, ये बहुत अच्छा प्रीचिंग करते हैं, सो एक्साइटेड, वो नबी का पीछे पड़ जाएंगे। 2 दिन का बाद वो नबी को छोड़ के फिर दूसरा पीछे चले जाएंगे, लोग दूसरा का बात सुनने लगेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लोग ऐसे भी करते हैं कोई समय में, आज कोई अच्छा प्रोफेसी करने वाला आदमी प्रीचिंग करेंगे, आज छोड़ो, आज चर्च नहीं जाना है मुझे, आज मुझे घर में बैठना है और इसका प्रीचिंग को सुनना है। सेम है, चर्च में जाके जो सुनेंगे मैं घर में और टीवी में वही देख लेंगे, और सोच के टीवी के आगे बैठ जाते हैं और उसको देखना शुरू करता है। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25 अगर आप पढ़ेंगे, हिब्रू चैप्टर 10 वर्स 25 में ये क्लियरली लिखा गया है, लेट नॉट गिव अप मीटिंग टुगेदर, तुम एक दूसरे का साथ मिलना मत छोड़ो। मीटिंग टुगेदर, हम लोग जब कलीसिया में जाते हैं, हम लोग जब फेलोशिप में जाते हैं, हम एक दूसरे के साथ मीटिंग होता है, एक दूसरे के साथ मुलाकात होता है। और जब मुलाकात होता है, उस मुलाकात किसके लिए होता है? As some are in the habit of doing, but let us encourage one another. सिर्फ मिलना ही काफी नहीं है, सिर्फ मिला जुलना काफी नहीं है, एक दूसरे को एनकरेज करना है, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए एनकरेज करना है। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है, हमें उसको एनकरेज करना है प्रभु का वचन के द्वारा और हमारा लाइफस्टाइल के द्वारा। हम लोग उसको जो परमेश्वर का सांत्वनादायक वचन के द्वारा हम उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना है, ना कि हम लोग सिर्फ चर्च में गया और बैठा और आया, ऐसा नहीं है। हम लोग एक दूसरे के साथ मिलाप करना, ये बाइबल हमें कहती है। And all the more as you see the day approaching, क्योंकि वो आने वाला दिन, प्रभु का आने वाला दिन आ रहा है, इसके लिए जितना करीब आ रहा है, हम इतना एक दूसरे को एक्सर्ट करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन गोट्स लोग, जो बकरा लोग या बकरी लोग क्या करता है, वो लोग अच्छा से वो लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग जो चर्च में कभी आते हैं तो दूसरों को निराश कर देते हैं, कभी किसी को अटैक करता है चर्च में अपना वचन के द्वारा, बोल वचन के द्वारा, और उसमें उसका प्रेजेंस, वो लोग जाते हैं उसका अपीयरेंस के द्वारा, उसका जो अपना जो स्वभाव के द्वारा दूसरों को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। लेकिन बाइबल हमें कहती है कि तुम एक दूसरे को उठाओ, विश्वास में एक्सर्ट करो। आमी जेतिया चार्चत जाओ, आमी एजने सिजनक आमी इस आत्मार बाक्যৰ যোগেদি, সান্তনা বাক্যৰ যোগেদি আমি উঠাব লাগে, তেওঁলোকক আগবঢ়াব লাগে। তেওঁ আমাক কিবা ক'লে আমি শুনি, তেওঁ আমাক যদি কিবা বুজাইছে আমি শুনি, বা আমাৰ কথাৰ যোগেদি আমি তেওঁক উঠাব লাগে, আমি আগবঢ়াব লাগে। কিন্তু আমি কি কৰোঁ? আমি অনেক ক্ষেত্ৰত যিসকলে ছাগলী স্বৰূপ, তেওঁলোকে মানুহৰ মন ভাঙি দিয়ে। তেওঁলোকে চাৰ্চত বা গীৰ্জাঘৰত যোৱাতকৈ তেওঁলোকে ঘৰত বহি টিভি চাবৰ কাৰণে, বা ঘৰত বহি কোনোবা এইটো প্ৰফেটৰ কথা শুনিবৰ কাৰণে, ঘৰত বহি কোনোবা এইটো অনলাইন কিবা চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাল পায়। কিন্তু মিটিং, বাইবেলে আমাক কৈছে আমি মিটিং ৰাখিবৰ কাৰণে, বাইবেলে আমাক কৈছে আমি ইজনে সিজনক লগ পাবৰ কাৰণে, যাতে আমি ইজনে সিজনক বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে প্ৰথম স্বভাৱটো এজন ছাগলী আৰু এজন যিটো মেৰ পোৱালিৰ মাজত, এটা ছাগলী আৰু এটা মেৰ পোৱালিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে যে ছাগলীয়ে সকলো লেতেৰা পেতেৰা খায় আৰু যিটো ভেড়া ছাগলীয়ে লেতেৰা বস্তুবিলাক নাখায়। ইয়াক যদি আমি আত্মিক ৰূপলৈ আনো, তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম যে ছাগলী স্বৰূপ যিসকল আছে তেওঁলোকে খালি যিকোনো বস্তুতে তেওঁলোকে সন্তুষ্ট হৈ তেওঁলোকে বহে, আত্মিক আহাৰলৈ তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে। কিন্তু যিসকল ভেড়া ছাগলী তেওঁলোকে আত্মিক আহাৰলৈ চেষ্টা কৰে, আত্মিক আহাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰে। 2 নম্বৰ, ছাগলীবিলাক বহুত এৰগেন্ট বুলি কৈছে, বা গৰ্বী বা অহংকাৰী। ছাগলীবিলাক যি আছে তেওঁলোক কি আছে? বহুত অহংকাৰী বা গৰ্বী। जो बकरी लोग बहुत ही क्या अहंकार करने वाला, बहुत घमंड रहने वाला होता है। कैसे हम लोग सोचते हैं कि जब बकरी कोई ऊंचा पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाते हैं, बहुत ऊपर चढ़ के, हम लोग कभी कभी पिक्चर में भी देख लेते हैं कि बहुत ऊपर चढ़ाई करने के बाद वो 2 पैर को फैलाते हुए वो उसका ऐसे उसका प्रतीत वो दिखाते हैं कि मैं सबसे ऊपर हूँ, आई एम ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग, मैं सबसे ऊपर हूं, वो ऐसे दिखाते हैं। दूसरा बात है,
जो बाफोमेट, जो शैतान का राजा जो है बाफोमेट, या जिसको आजकल जो लूसीफर जिसको हम लोग कहते हैं, जो आजकल आदमी लोग शैतान का सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, शैतान का सेवा करने वाला जो आदमी लोग है, वो लोग जिस मूर्ति को बनाया है वो भी क्या शेप का है? वो भी बकरा का शेप का है। उसका जो मुंह है बकरा का जैसा, लेकिन शरीर आदमी का जैसा है। बाफोमेट, इसका मतलब है जो शैतान, जो उसका प्रतीक, शैतान का दूसरा प्रतीक माना जाता है किसको? बकरा या बकरी को। बाइबल में लिखा है, वो लोग बाइबल में आप देखिएगा आइज़ाया चैप्टर 14 और वर्सेस 13-14 में इसी वचन को लिखा गया है कि शैतान सोचता था मैं तो ऊपर, सबसे ऊपर तारों का ऊपर बैठ के मैं राज करूंगा। लूसीफर सोचता था मैं तारों का सबसे ऊपर बैठ के मैं राज करूंगा और मैं परमेश्वर का जैसा मैं बनूंगा, परमेश्वर का जैसा हो जाऊंगा। ऐसे उसका क्या था? विचार था। शैताने ভাবিছিলে মই আটাইতকৈ ওপৰত থকা ওহত থকা তৰাটোত বহিম আৰু সকলোৰে ওপৰত মই ৰাজত্ব কৰিম। শৈতানে ভাবিছিলে যে মই সকলোতকৈ ওপৰত থাকিম, কিন্তু ঈশ্বৰে তাক আটাইতকৈ তললৈ পেলালে। আমি ৰিভেলেশ্যনত চালে দেখিবলৈ পাওঁ, প্ৰকাশিত বাক্যত যিটো এটা গাঁত আছে, যিটো এটা কুঁৱা আছে, যাৰ সেই কুঁৱাটো ইমানেই দ যাৰ তলি কেতিয়াও বিচাৰি নাপায়। যিকোনো বস্তুৰ তলি থাকে, বটম থাকে। গৈ আমি কুঁৱা এটা খান্দিলেও 100 ফুট খান্দিলেও তলত কি থাকে? এটা আমি তলি থাকে, তাৰপিছত আমি যাব নোৱাৰোঁ। কিন্তু ঈশ্বৰে সেই শৈতানক এনেকুৱা জেগাত পেলালে, বটমলেছ পিট, যাৰ তলত আৰু কোনো নাই। সি সদায় তললৈ গৈয়ে আছে, তললৈ গৈয়ে আছে, তললৈ গৈ আছে। অৰ্থাৎ কি কাৰণে? সি ভাবিছিলে মই আটাইতকৈ ওখত উঠিম, কিন্তু ঈশ্বৰে সেই শৈতানক বা সেই স্বৰ্গদূতক যেতিয়া তাক তললৈ পেলালে, সি শৈতান বনিলে, সি আটাইতকৈ তললৈ আহিলে আৰু তললৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে ছাগলী এটা স্বভাৱ আমি আৰু এটা দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া ছাগলী স্বভাৱটো এনেকুৱা হয়, সি অহংকাৰী। ছাগলী স্বভাৱটো অহংকাৰী বুজায়। আৰু ছাগলীয়েটো কি বিচাৰে? মই ফিজিকেলি হওক বা মই টকা পইচা ফাইনেন্সিয়েলি হওক বা মই অহংকাৰৰ পৰা হওক, আনতকৈ মই উত্তম, আই এম বেটাৰ দেন দ্য আদাৰ্ছ, আনতকৈ মই উত্তম, এই কথাটো তেওঁ সেই ছাগলী স্বভাৱৰ মানুহবিলাকে দেখাবৰ কাৰণে বিচাৰে। ইভেন ইন দ্য চাৰ্চ দেয়াৰ আৰ পিপল, those who shows themselves they are the better, they are the very best than the rest of the people. বাকীবিলাকতকৈ আমি বহুত ভাল, এই কথাটো তেওঁলোকে দেখাবৰ কাৰণে বিচাৰে। সেইকাৰণে তেওঁলোকে মানুহৰ লগত মিক্স আপ নহয়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কয় এইটো মানুহৰ লগত কথা বতৰা নাপাতে, তেওঁলোকে অহংকাৰত থাকে। তেওঁলোকে ভাবে যে আমি সকলোকে ডমিনেট কৰিম, আমি সকলোকে বশ কৰিম, আৰু আমাৰ তলত তেওঁলোকে থাকিব। টকা পইচা ফালৰ পৰা আমাৰ তলত থাকিব, আৰু আমাৰ এপিয়াৰেঞ্চৰ ফালৰ পৰা, দেখাৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা আমাৰ ফিজিকেলি তলত থাকিব, আৰু আমাৰ যিটো অহংকাৰ, আমাৰ যিটো গৌৰৱ আছে তাতকৈও মানুহবিলাক তলত থাকিব, এইটো ভাৱনা কৰে। চ' these are the qualities of gods. But on the other hand, sheep, ছাগলীবিলাকে সদায় ওপৰলৈ কি কয়? ঘাঁহ বিচাৰি গৈ থাকে। আমি দেখোঁ যে গছৰ পাত এটা নামি আহিলে, গছৰ ডাল এটা নামি আহিলে তাকো খাবৰ কাৰণে ছাগলী উঠে। কিন্তু আনহাতে on the other hand, sheep, they are very peaceful animal. বহুত শান্তিপ্ৰাপ্ত, শান্তপ্ৰিয় বা শান্তিপ্ৰাপ্ত বিচৰা বা নম্ৰ তেওঁলোকে জন্তু হয়। তেওঁলোকে সদায় তললৈ ভালটো বিচাৰি বিচাৰি খায়, ভাল বস্তুটো তেওঁলোকে বিচাৰি বিচাৰি খায়। তেওঁলোকৰ মূৰটো সদায় তললৈ থাকে। কিহৰ কাৰণে? তেওঁলোকে অহংকাৰ কৰি ওপৰলৈ চোৱা নহয়, তেওঁলোকে নম্ৰতাৰে তললৈ থাকে, আৰু তেওঁলোকে এইটো দেখুৱাবৰ কাৰণে বিচাৰে আমি অহংকাৰী নহয়, বা আমি এইটো শয়তানৰ সন্তানবিলাকৰ নিচিনা আমি নিজকে বেছি শ্ব' কৰোঁতা দেখাওঁতা নহয়, বা আমি আমাৰ বহুত আছে বুলি আমি দেখাওঁতা নহয়, কিন্তু খ্ৰীষ্টত আমি নম্ৰ। উই আৰ হাম্বল ইন ক্ৰাইষ্ট জিজাছ। আৰু সেইকাৰণে ভেড়া ছাগলীবিলাক সদায় নম্ৰতাৰ প্ৰতীক দেখুওৱা যায়। সেই সদায় নম্ৰ হয়, সেই সদায় নম্ৰ হয়, দেখিবলৈ একেই, ছাগলী আৰু ভেড়া ছাগলীৰ মাজত থাকিবলৈ একেই, কিন্তু ছাগলীবিলাক সদায় কি হয়? অহংকাৰী। আমাৰ মাজতো তেনেকুৱা বহুত মানুহবিলাক আছে যিসকল অহংকাৰী। চাৰ্চত আহে, আপোনাৰ ওচৰতে বহে, কিন্তু কেতিয়াও আপোনাক মাত নিদিয়ে। আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ ওচৰত থকা মানুহজনক মাত দি পিনে গুচি যাব, কিন্তু কেতিয়াও আপোনাৰ লগত কথা নাপাতে। কিয়নো তেওঁলোকে আপোনাক বেয়া দৃষ্টিৰে চায়। মই হয়
কিছুমানে এনেকুৱা মনত ভাৱনা কৰে, মোৰ চাৰ্চত তই কিয় আহিছ? এনেকুৱা বহুত মানুহবিলাকৰ ভাৱনা হয়, আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এইটো আমাৰ চাৰ্চ, তোমাৰ কি দৰকাৰ আছে ইয়াত? এনেকুৱা ভাৱনা কৰা মানুহবিলাকো আছে। তেওঁলোকক ছাগলীৰ লগত তুলনা দিয়া গৈছে। আৰু আনহাতে নম্ৰতা থকা, যিসকল নম্ৰভাৱে আত্মিকতাৰ ফালে বিচাৰে, আত্মিকতাৰ ফালে ভাৱনা কৰে, সদায় আত্মিক বস্তুটো বিচাৰি যায়, তেওঁলোকক ভেড়া ছাগলীৰ লগত তুলনা দিয়া হৈছে। If we read Proverbs chapter 8 verse 13, আমি যদি প্ৰভাৰ্ব 8 অধ্যায় আৰু 13 পদটো চাওঁ, তাত আমাক এইদৰে লিখা আছে, Proverbs chapter 8 and verse 13. The Bible says, Proverbs 8:13, To fear the Lord is to hate evil. ঈশ্বৰলৈ ভয় ৰখাটোৱে বেয়াটোক ঘিন কৰা বুজায়। If you respect God, if you have the fear in your heart, then you are hating evil. আপুনি যদি ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰে, ঈশ্বৰক ভয় ৰাখে, ঈশ্বৰক ভয় ৰখা মানে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰা। ঈশ্বৰক এইটো কাৰণে ভয় কৰিবলৈ নহয় যে তেওঁ মোক পানিছমেণ্ট দিব পাৰে, তেওঁ মোক নৰকত পেলাই দিব পাৰে, তেওঁ মোক বেমাৰ আনি দিব পাৰে, তেওঁ মোক হাও দিব পাৰে, এইটো ভয়ৰ কথা ইয়াতে কোৱা নাই। ইয়াত আমাক কিহৰ ভয়ৰ কথা কৈছে? ইয়াত আমাক কৈছে যে ঈশ্বৰৰ আজ্ঞা পালন কৰা। To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior and perverse speech. ইয়াতে আপুনি অহংকাৰটোক বেয়া পাব লাগিব, যিবিলাক এৰোগেণ্ট, অহংকাৰী, ঘমণ্ডি, এনেকুৱাবিলাকক বেয়া পাব লাগিব। ইভিল বিহেভিয়াৰ, যিবিলাকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেকুৱাক বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব। আৰু মানুহৰ মন খেলি মেলি কৰা যিটো শিক্ষা, এনেকুৱাবিলাকৰ আপুনি বেয়া পাব লাগিব। এইটো হৈছে আমাক বাইবেলে দিয়া আমাক শিক্ষা। যদি আমি বাইবেলৰে শিক্ষাটো পালন কৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ঈশ্বৰৰ দৃষ্টিত নম্ৰ হ'ব পাৰিম। তেতিয়া আমি ছাগলী বুলি গণিত নহ'ম, আমি তেতিয়া ভেড়া বুলি গণিত হ'ম। কিন্তু যদি আমাৰ এতিয়াও অহংকাৰ আছে, যীশুখ্ৰীষ্টক পোৱাৰ পিছত যদি আমি নিজৰ অহংকাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই, নিজৰ ঘমণ্ড, নিজৰ যিটো প্ৰাইড আমি যেতিয়া হয়তো দমন কৰিব পৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ছাগলী। 3 নম্বৰ, আমি আন এটা বস্তু তাতে দেখিবলৈ পাওঁ, ছাগলীবিলাক যুঁজ কৰোঁতা বা আক্ৰামক। जो बकरा या बकरी लोग है, वो लोग क्या करता है? हमेशा लड़ाई के लिए रेडी रहता है। बकरी और मेमना दोनों देखने में के लिए एक ही है, लेकिन बकरी लोग का क्या होता है? उसका हॉर्न निकलता है, जिसको क्या बोलता है? सिंग। हॉर्न निकलता है। दोनों का एक ही है देखने के लिए, लेकिन दोनों क्या करता है? हॉर्न निकलता है, सिंग निकलता है। तो एग्रेसिव होता है और लड़ाई झगड़ा करने के लिए हमेशा क्या करता है? वो रहता है, एग्रेसिव होता है, हमेशा लड़ाई करने कोई बात के लिए। चर्च में हो आप, कोई टॉपिक कोई बोला, कुछ मीटिंग में हो, जनरल मीटिंग में हो, या चर्च में कोई ऐसा कुछ डिस्कशन चल रहा है उसमें हो, या आप कुछ वचन बोला उसमें हो, वो लोग हमेशा नोस निकालने के लिए, उसमें कोई खोट निकालने के लिए रेडी रहता है, और खोट निकालने के बाद उसमें लड़ाई करने के लिए रेडी रहता है। ছাগলীবিলাকে যুদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে, যুঁজিবৰ কাৰণে সদায় যুগুত হৈ থাকে। তেওঁলোকে এগ্ৰেছিভ, কেনেকৈ যুঁজিম? কিন্তু আনহাতে ভেড়াবিলাক সদায় নম্ৰ। ভেড়াবিলাকে এইবিলাক নকৰে। ভেড়াৰ হেঙো নাই যে সি গৈ পিনে যুঁজিব, কিন্তু ছাগলীয়ে সদায় যুঁজিবৰ কাৰণে এৰোগেণ্ট বুজায়। তো আমি 1 Peter chapter 5 verse 8 লিখা আছে যে আমাৰ শত্ৰু শয়তানে আমাক কেনেকৈ নষ্ট কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে সি উপায় বিচাৰি পৰিছে। সেইকাৰণে আমাক কি ক'ব কাৰণে কৈছে? 1 Peter chapter 5 and verse 8 আমাক কৈ আছে,
Be self-controlled and alert. Self-control, নিজকে নিজে কন্ট্রোল করা, নিজকে নিজে সংযম করা. आप अपने आप को कंट्रोल करो. Self-control. अगर आप self-control नहीं काम कर पा रहा है तो आप एक मसीही होना बहुत ही बेकार है. आप आंख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपना कान को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपना मुंह को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपना शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. अगर आपका जो सोचने वाला जो आप ब्रेन है, सोचने वाला दिमाग है, उसको कंट्रोल कर नहीं पा रहे तो आप मसीही होना बेकार है. क्योंकि बाइबल हमें इस सब इसमें लिखा है. और सेल्फ कंट्रोल एक गिफ्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट भी है, पवित्र आत्मा का फल भी है, जो गलातियन चैप्टर 5 वर्स 22 में लिखा है. सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा का फल भी है. सेल्फ कंट्रोल. अगर आपका पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप एक बकरी या बकरा का जैसा है जिसका पास कंट्रोल नहीं है, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने के लिए. लेकिन बाइबल हमें कहती है तुम बी अलर्ट एंड बी सेल्फ कंट्रोल. क्योंकि अगर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अगर आप सचेत नहीं है तो आपका शैतान जो एनिमी जो है आपको नष्ट करने के लिए, आपको चिन्ह भिन्न करने के लिए तैयार है. दैट मीन्स शैतान इज एवर रेडी. इफ यू आर नॉट ए सेल्फ कंट्रोल पर्सन, इफ यू आर नॉट अलर्ट you are not alert, then that Satan is going to devour you. Be very vigilant. आपको और हमको बहुत ही उसको अच्छा से देखना है. हम लोग परिचर्चा करते हैं, gossiping. लेकिन 1 Timothy chapter 5 and verse 13 में क्या लिखा है gossiping के बारे में? 1 Timothy chapter 5 verse 13. Besides, they get into the habit of being idle and going about from house to house. वो लोग सिर्फ ऐसे आलसी नहीं रहता है, लेकिन एक घर से दूसरा घर जाते हैं. कौन लोग आदमी जाते हैं? गॉसिप करने वाला. And not only do they become idlers, but also gossips and busybodies, saying things they ought not to. वो लोग क्या करते हैं? busybody. और वो लोग क्या करते हैं? gossip करता है. लेकिन Christians are prohibited from gossiping. Bible strictly tells us that you should not gossip. लेकिन हम लोग gossip करते हैं. हम लोग चर्च में हम लोग प्रचार सुन लेते हैं, प्रचारक के द्वारा, पास्टर के द्वारा. साथ में हम लोग क्या करते हैं? गॉसिप करना शुरू करता है. आजकल ये एक ट्रेंड हो गया. हमारा मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, उनका मिनिस्ट्री क्या कर रहा है, उनका चर्च क्या कर रहा है, वो पास्टर क्या कर रहा है, उसका मिसेस क्या कर रहा है, वो उसका इवेंजलिस्ट क्या कर रहा है, हमारा इतना आदमी है, उसका कितना आदमी है. ये चर्च में चर्चा होता है. और ये बहुत ही दुखद बात है. तो बहुत दुख লগা কথা. আজি আমাৰ এইটো ট্ৰেন্ড হৈ গৈছে যে আমাৰ মণ্ডলীত ইমান মানুহ আছে, তাৰ মণ্ডলীত মানুহ নাই. সি ইমান দিনৰ পৰা কি কৰি আছিলে, সি ইমান দিনৰ পৰা কি প্ৰচাৰ কৰিলে, তাৰ একো ফ্ৰুট আমি দেখা নাপাওঁ, তাৰ আমি একো ফল দেখা নাপাওঁ, আমিতো ইমানখিনি কৰিলো, আমাৰ এইটো হৈ গ'ল. এইটো আজিকালি ট্ৰেন্ড হৈছে. সো দিস ইজ গসিপিং. এইটো হৈছে আপুনি কি কৈছে? পৰচৰ্চা কৰা, গসিপ কৰি আছে. কিন্তু বাইবেলে আমাক মানা কৰিছে. If you are a gossipers, then you are a what? God. যদি আপুনি গসিপ কৰি ফুৰিছে তেতিয়া আপুনি ছাগলী হয়, যুঁজিবৰ কাৰণে. আপুনি হুৰুঙা বিচাৰি আছে যুঁজিবৰ কাৰণে, কম্পেয়াৰ কৰি আছে আপুনি. Number 2, Christians are prohibited from blaspheming. ঈশ্বৰ নিন্দা কৰা. Colossians chapter 3 and verse 8 লিখা আছে. Colossians chapter 3 verse 8 লিখা আছে. আপুনি চাওক. Colossians chapter 3:8 মই বাইবেলৰ পৰা দেখাইছো যাতে সকলোৱে বুজি পায়. But now you must rid yourself all such things as these: anger, rage, malice, slander, and filthy language from your lips. First Colossians chapter 3 verse 8 আৰু 2 Timothy chapter 3 verse 2. 2 Timothy chapter 3 verse 2. মই প্ৰত্যেকটো বস্তু বাইবেলৰ পৰা দেখাইছো আপুনি বুজি পাব কাৰণে. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. So this is a blasphemy. নিন্দা কৰা,
ব্লাছফেমি, ঈশ্বৰ নিন্দা কৰা, মানুহৰ নিন্দা কৰা, ঠাট্টা কৰা, এইবিলাক সকলোবিলাকৰ পৰা আমাক আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে কৈছে। যদি আপুনি এতিয়াও নিন্দা কৰি আছে, যদি আপুনি এতিয়াও ঈশ্বৰক বিশ্বাসী হৈ, আপুনি ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যা কৰা মানুহ হৈ, ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰা মানুহ হৈ, প্ৰাৰ্থনা কৰা মানুহ হৈ যদি এতিয়াও আপুনি নিন্দা কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ছাগলী। আৰু ছাগলীবিলাকৰ স্থান বাওঁহাতে আমি দেখিবলৈ পালোঁ। ছাগলীবিলাকৰ স্থান ঈশ্বৰৰ বাওঁহাতে। কিন্তু যদি আপুনি কোনে কি কৰিছে, তাহলে আপোনাৰ তেওঁ যি কৰিছে আপুনি সেইটো সকলোবিলাক ঈশ্বৰক সোধাই দিছে। যদি আপোনাৰ অপকাৰো কৰিছে কোনোবাই, সেইটো আপুনি ঈশ্বৰক সোধাই দিছে। কোনোবাই যদি আপোনাৰ বদনামো কৰিছে, সেইটো আপুনি ঈশ্বৰক সোধাই দিছে। তেতিয়া আপুনি এজন ভেড়া পোৱালি বা আপুনি ভেড়া ছাগলী। তৃতীয়তে আমাক বাইবেলে কৈছে যে বদনাম নকৰিবৰ কাৰণে। আমি অলপ আগতে 2 Timothy 3 chapter 3 verse 2 to 5 আৰু 1 Peter 3:16 আমি পঢ়িলে গম পাম, we are prohibited from slandering each other. আমি বদনাম কৰাটো আমাৰ মানা আছে, ইজনে সিজনক বদনাম কৰাটো মানা আছে। কিন্তু আজি আমি কি কৰোঁ? বদনাম কৰোঁ পুলপিতত উঠি। ঈশ্বৰৰ যিটো জেগা পবিত্ৰ স্থান বুলি কোৱা হয়, য'ত ঈশ্বৰৰ পৰিচৰ্যা কৰা হয়, আৰু পুৰণা নিয়মত আমি যেতিয়া চাবলৈ যাওঁ অতি পবিত্ৰ স্থান, য'ত পুৰোহিতে সোমাব পাৰে, আৰু সেই বছৰত এবাৰ সোমাব পৰা স্থান, আৰু প্ৰভু যীশুখ্ৰীষ্টৰ ক্ৰুচত মৃত্যু হোৱাৰ যোগেদি সেই স্থানটো আমাৰ সকলোৰে কাৰণে খুলি গ'ল। সেইটো অতি পবিত্ৰ স্থান, এতিয়াও বেদী অতি পবিত্ৰ স্থান, য'ত অহচিতাৰে উঠিব নালাগে। কিন্তু এনেকুৱা জেগাত উঠি আমি কি কৰোঁ? বদনাম আৰম্ভ কৰোঁ ইজনে সিজনৰ বিৰুদ্ধে। এজন পাষ্টৰে আনজন পাষ্টৰৰ বিৰুদ্ধে, এজন বিশ্বাসীয়ে আন এজন বিশ্বাসীৰ বিৰুদ্ধে, এজন ইভাঞ্জেলিষ্টে আন এজন ইভাঞ্জেলিষ্টৰ বিৰুদ্ধে, এজন মিছনাৰী আন এজনৰ বিৰুদ্ধে আমি বদনাম কৰোঁ। It is very sorrowful thing. এটো বহুত দুখৰ কথা যে আমি বদনাম কৰোঁ। এতিয়া আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে ছাগলীবিলাকৰ যিটো চৰিত্ৰ সদায় যুঁজিবৰ কাৰণে, বিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে হিং আছে। সি সদায় নিজৰ জাকৰ লগতো যুঁজিব। কোনোবা যদি আগবাঢ়ি গৈছে তাকো খেদাই পিনে সি আগবাঢ়িবৰ কাৰণে বিচাৰিব ছাগলীয়ে। কোনোবা যদি ভাল বস্তু খাইছে তেতিয়াহ'লে তাক খুচিব, তাৰ ওচৰত যাব। কিন্তু ছাগলীৰ এইটো স্বভাৱ হয়। আৰু যদি আপুনি সেইদৰে একেই স্বভাৱ কৰি আছে, কোনোবা মিছনাৰীয়ে ভাল কাম কৰিছে বা প্ৰচাৰ কৰি আছে ভালদৰে বা ভালকৈ চলি আছে, তেতিয়া তাৰ পিছত যদি আপুনি লাগিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি ছাগলীৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে। কেনেকৈ খুচি তাক মই তাৰ জেগাটো লওঁ, কেনেকৈ তাৰ মেৰবিলাকক মই নিজৰ মেৰৰ ওচৰলৈ আনো, আপুনি যদি এতিয়াও সেই ভাৱনাটো কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা ছাগলীৰ লগত আপোনাক তুলনা দিয়া হ'ব। আপোনাৰ স্থান ঈশ্বৰৰ বাওঁহাতে। এতিয়া First Timothy chapter 6 verses 3 to 5 যদি আপুনি পঢ়ে, তাত লিখা আছে, if anyone teaches false doctrines and does not agree to the sound instruction of our Lord Jesus Christ and to godly teaching, he is conceited and understands nothing. He has an unhealthy interest in controversies and quarrels about words that result in envy, strife, malicious talk, evil suspicion, and constant friction between men of corrupt mind who have been robbed of the truth and who think that godliness is a mean to financial gain. Hey মানুহবিলাকে এইটোৱে ভাৱনা কৰে যে ঈশ্বৰৰ লগত থকাটো হৈছে আমাৰ টকা পইচা ঘটাৰ উপায়। ছদ্মবেশী ভেকচন ধৰা মানুহ ভাল বুলি প্ৰাৰ্থনা কৰিব, কিন্তু ভিতৰি ভাল নহয়। ঈশ্বৰৰ মানুহবিলাকৰ বিৰুদ্ধে কথা লগাই ফুৰিব, কিন্তু সেইটো বেয়া। সেইকাৰণে আজি আমাক এনেকুৱা মানুহবিলাকক বাইবেলে কৈছে কাজিয়া কৰা মানুহ। 1 Timothy chapter 3 verse 3, contentious people, এইবিলাক মানুহৰ পৰা আঁতৰি থাকিবৰ কাৰণে বাইবেলে আমাক শিকাইছে। ছাগলী যিবিলাক আছে, ছাগলী স্বভাৱৰ যিবিলাক আছে, তেওঁলোকে সদায় কাজিয়া কৰিবৰ কাৰণে, जो बकरी नेचर का होता है, हमेशा आर्गू करने के लिए, हमेशा एक दूसरे का साथ लड़ाई करने के लिए, हमेशा एक दूसरे का साथ जो उसका विरोध करने के लिए वो तैयार रहता है। लेकिन जो शिप, जो मेमना का स्वभाव रहने वाला आदमी, वो ऐसा काम नहीं करता है। दूसरा बात, और एक बात मैंने बकरी का इसमें मैंने पढ़ा कि जो बकरी लोग क्या करता है,
वो जो फेंसिंग उसको जिस घेरा में रखा जाता है, फेंसिंग को हमेशा झाप मार के वो भाग जाता है। फेंसिंग छोटा हो तो उसमें से वो झाप मार के भाग जाता है। যিবিলাক ছাগলীয়ে কি কৰে, ফেন্সিং জাপ মাৰি পিনে গুচি যায়। বহুত মানুহবিলাক আজি এনেকুৱা আছে যে তেওঁলোক দে আৰ নট ছেটিছফাইড। তেওঁলোকে যিটো জেগাত থাকে সেইটো জেগাত তেওঁলোকে ছেটিছফাইড নহয়। দে আৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দেয়াৰ পাষ্টাৰ, দে আৰ নট ছেটিছফাইড উইথ দেয়াৰ পিপল, উইথ দ্য কংগ্ৰিগেশ্যনছ, the praise and worships. They are not satisfied, unsatisfied person. আৰু এনেকুৱা মানুহবিলাকে কি কৰে, তেওঁলোকে মণ্ডলী হলাই পৰে। আজি তাত যাব, দুদিনমান যাব, তাৰ পৰা বেলেগ জেগাত যাব, দুদিনমান যাব, তাৰ পৰা বেলেগ জেগাত যাব। এনেকুৱা মানুহবিলাকে মণ্ডলী সলনি কৰি ফুৰে। যিদৰে ছাগলীয়ে জাপ মাৰি যায়, বাউণ্ডেৰীটো পাৰ হৈ যায়, ফেন্সিং পাৰ হৈ যায়, তেনেকৈ তেওঁলোকেও নিজৰ ফেন্সিঙত নাথাকে, নিজৰ মণ্ডলীৰ ফেন্সিঙৰ ভিতৰত নাথাকে। তেওঁলোকে কি কৰে, ইফালৰ পৰা সিফালে জাপ মাৰি ঘূৰি ফুৰে। কিন্তু বাইবেলে আমাক তেনেকৈ কৰাটো আমাক মানা কৰিছে। হিব্ৰু চেপ্টাৰ 13 ভাৰ্চ 17। Hebrew chapter 13 verse 17. Bible says, obey your leaders and submit to their authority. Obey your leaders. তোমালোকৰ লিডাৰ বিলাকৰ obey কৰিবৰ কাৰণে, মানিবৰ কাৰণে কৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ অথৰিটি, তেওঁলোকক কি ক্ষমতা দিয়া হৈছে তাৰ অধীন হ'বৰ কাৰণে কৈছে। লিডাৰ বুলি ক'লে পাষ্টাৰ বা ডিকন বা চেয়াৰমেন বা চলাওঁতা, তেওঁলোকৰ অধীনত থাকিবৰ কাৰণে আমাক বাইবেলে শিকাইছে। তাৰ কাৰণে পাষ্টাৰ সকলো যুগুত হ'ব লাগিব নিজৰ মণ্ডলী চলাবৰ কাৰণে। তাৰ কাৰণে চেয়াৰমেন সকলো সেইদৰে যুগুত হ'ব লাগিব, অযোগ্য হ'ব লাগিব নিজৰ মণ্ডলীটো আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত আমি থকাটো দৰকাৰ, বাইবেলে আমাক শিকাইছে। কিয়নো তেওঁলোকে আমাক দেখভাল কৰে। If your pastor is there to look after you, then you have to obey him, because God has appointed him as a pastor over you. So do not jump your fence. আপোনাৰ যিটো ফেন্সিং দিয়া আছে সেইটো জাপ মাৰি পাৰ হৈ নাযাব। বহুত মানুহবিলাকে মণ্ডলীত কি কাৰণে আহে, ৰেগুলাৰলি নাহে। কিছুমানে সোনকালে আহে, খুব সোনকালে গুচি যায়। তেওঁলোকে কি কৰে, এক্টিভিটিজবিলাকত জইন নকৰে, তেওঁলোকে চাৰ্চৰ কামবিলাকত জইন নকৰে। এনেকুৱা মানুহবিলাক কি আছে, ছাগলী নিচিনা জাপ মাৰি ফুৰে। তেওঁলোকে নিজৰ মণ্ডলী কামত সন্তুষ্ট নহয়, তেওঁলোকে বেলেগ মণ্ডলীৰ কামতো সন্তুষ্ট নহ'ব। তেওঁলোকে কেতিয়াও সন্তুষ্ট নহ'ব। जो व्यक्ति अपना चर्च में सेटिस्फाई नहीं होता है, किसी कोई जगह में भी वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए बकरी का नेचर है, वो हमेशा अपना फेंसिंग को, अपना जो चारों ओर लगाने वाला जो बेड़ा को तोड़ के भाग जाता है। और एक वचन मैंने देखा बाइबल में स्टडी करने का समय में, जो बकरी लोग होता है हमेशा उसका मूड ही होता है। बकरा या बकरी लोग मूड में रहता है, आप उसका मूड को कभी पकड़ने नहीं सकेगा। कोलोसियन चैप्टर 3 एंड वर्स 13 अगर आप पढ़ेंगे तो आप उसमें आपको पता चलेगा। कोलोसियन चैप्टर 3 एंड वर्स 13। Bear with each other and forgive whatever grievance you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. मूडी रहने वाला आदमी, उसका अपना एटीट्यूड के लिए, बकरी का एटीट्यूड के लिए उसको बहुत ही फेमस है। बकरा बकरी आप देखिएगा, उस दिन मैंने देखा था यूट्यूब में एक जगह में कि बड़ा सा सांड का साथ वो लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं। वो छोटा सा बकरी बड़ा सा सांड का साथ वो लड़ाई करने जा रहे हैं। उसका हिम्मत तो देखो। जो एक सांड है, एक ऑक्स है, बुल है, एक ही झटका से उसको दूर फेंक सकता है, लेकिन उसका साथ लड़ाई करने जाए, क्योंकि उसका एटीट्यूड होता है। जो बकरा या बकरी नेचर रहने वाला जो आदमी है, उसका भी एटीट्यूड ज्यादा रहता है। वो फॉरगिविंग पर्सन नहीं है। किसी को क्षमा देने वाला उसका पास क्षमा उसका वो नहीं रहता है, वो क्षमा नहीं देने वाला आदमी है। लेकिन बाइबल कहते हैं अगर तुम्हारा किसी का साथ कोई झगड़ा है, अगर तुम्हारा साथ कुछ अगर कोई प्रॉब्लम है, तो साथ ही साथ उसको क्या करो, उसका सॉल्व करो,
फॉरगिव एज द लॉर्ड फॉरगिव यू। जैसे परमेश्वर हमें माफ दिया ऐसे तुम उसको माफ कर दो। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। बकरी कैरेक्टर रहने वाला आदमी या बकरी जैसा चरित्र रहने वाला आदमी वो किसी को माफ नहीं करता है। वो हमेशा क्या करता है, अपना ही रहता है। मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, वो प्रॉब्लम तो उसका है, वही कर रहा था, वही है ऐसा। लेकिन हमेशा याद रखना, आपको दूसरे का हमेशा माफी देना है। ये यीशु मसीह हमें सिखाया है। लेकिन याद रखना, अगर आपका नेचर बकरा या बकरी का जैसा है तो आपको हमेशा परमेश्वर दाहिने बाएं तरफ रखेगा। लेकिन अगर मेमना चरित्र आपका पास में है, आप मेमना चरित्र रहने वाला आदमी है, तो परमेश्वर आपको हमेशा दाहिने ओर रखेगा। इसीलिए चॉइस इज योर्स, आपको सोचना है।